Hello students, today we are going to start subject verb agreement. So you all know well what is subject. Subject means doing part, right? Okay, and what do you understand by the verb? Verb means the action which has taken place in the sentence. Let's try to understand with a simple example. For example, she is a good girl. She is a good girl. Okay, so here she is what? She is subject, and subject will decide which kind of verb we are supposed to use. For example, if it is she, then we are using here is. If it is we, then what do we use? Yes, we will use we are, right? So when we try to fix the verb according to the subject, it is called subject verb agreement. So this is for class 8 students mastering grammar. Subject verb agreement, like Rita is a good girl. So Rita is what? Subject, and is a good girl is means is used here according to the Rita is singular subject, so we will put here is. But suppose if two persons are there like Rita and Meena, so they are plural, so we will use here plural verb. Understood? So when we are using verb according to the subject, that is called what? Subject verb agreement. Now let's try to understand. The first person, we, takes place a plural verb. We always takes a plural verb. We are, we have. Okay, so it always takes plural verb. I is the first person. Singular takes a singular verb with am and was. Like I was going, am playing. You know that I takes another verb, that is am. Verb can be used as is, am, are, was, were. Have may be used have, had, will have, and shall have according to the subject. Now, fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets. So, she dash. So, here she is singular verb. So, we will use here singular subject. So, we will use here singular verb. So, the singular verb is learn. We will add s or es in the given verb. So, she learns to play the piano from Mrs. Gupta. Second is she makes delicious pizza, right? She makes delicious pizza. Next one, you के साथ बी का मतलब हुआ is, am, are, was, were. So you know that you के साथ में हम are लगाएंगे. So you are supposed to reach the station by now. I के साथ हमेशा am लगता है. So I am planning to go trekking in the mountains. So here B we will use here are. Are you going out today? Next one, why have they left? Next, a group of trekkers will be going up the hill. Ram and Roshan are good friends. Clear? Now, more points to remember. Proximity of subjects and verbs. They should be placed as close as possible in a sentence, since there is always an agreement between the subject and verb. So, she is subject here and loves. It is a singular form according to she, right? So this is verb. In the above sentence, the subject is placed immediately before the verb. In some sentences, the subject may not be placed next to the verb. For example, the long fairy tales that she narrated. अब verb यहाँ पर आया है इतने बड़े subject के बाद. Understood? The long fairy tales that she narrated were interesting. So it's not important कि जो subject है वो वर्ब के तुरंत पहले आएगा, है ना? ठीक है, वो थोड़ी देर, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के थोड़ी देर बाद में भी आ सकता है, लाइक यू कैन सी हियर इन दिस एग्जाम्पल. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ सम मोर एग्जाम्पल. In the above sentence, the subject is friends. This one is the example. My friends who are fun-loving want to go out for a movie with you. So here in the above sentence, the subject is friends and it is the third person plural number. So it takes the verb want. इसमें हम s और es नहीं लगाएंगे क्योंकि s और es लगा करके हम singular बनाते हैं. और यहाँ पर friends जो है वो third person plural है, तो हम यहाँ पे want का use करेंगे. Clear?
लुक एट दिस एग्जाम्पल, योर पेरेंट्स हु आर अंडरस्टैंडिंग. अब यहाँ पे पेरेंट्स भी थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म है, तो हम इसके साथ में want का यूज़ करेंगे. क्लियर? When a sentence begins with the word there, the noun placed after the verb is the actual subject of the sentence. There is a parrot in the cage. So here, parrot is the subject and is what? Verb. There are parrots. There is parrot. So depend on the use of subject. The word there is the preparatory or introductory subject. The subject, a parrot, is singular and it takes the singular verb is. Like there are plants, you can see here. So plants is subject here, plural. So we will put here are. Now let's try to solve these examples. Read the following sentences and fill in the blanks with appropriate form of verbs given in the brackets. Now the notorious thief. So it is given in plural form. So we will use here have. The notorious thieves have stolen the statue. Second, the aroma of the cookies. Aroma is singular form, so we will use here is. यहाँ पे blank sheets जो है वो plural form में है, तो हम यहाँ पे are का use करेंगे. Here are the blank sheets you asked for. Again team है, तो team जो है वो singular verb लेगी. There is a team of cricketers waiting in the stadium. The theme of all the stories is, because theme जो है वो singular form है, तो हम यहाँ पे is लगा देंगे. Here is a bouquet of flowers you ordered for. So bouquet, you know, bouquet is singular form, right? Next is you can read some example. For example here, bread and butter. Bread and butter is ideal for breakfast. तो इन दोनों को एक में ही काउंट किया जाता है. ठीक है. Next is if the subject and verb are separated by a group of words, the verb must agree with the subject. अब यहाँ पे देखो man जो है वो अलग हो गया. The man इसके बाद कॉमा लगा के उनको सेपरेट कर दिया गया, तो man के हिसाब से verb आ जाएगा is. The waterfall है, waterfall भी सेपरेट किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग is का यूज़ करेंगे. When the name of a country, a book or a film is denoted in a plural noun, it is used with the singular verb. For example, the United States of America. So it's showing a group ना, तो इसकी वजह से हम इसमें क्या करेंगे? सिंगुलर का यूज़ करेंगे. Like United Kingdom has launched. People, पुलिस एंड कैटल, दे आर कंसीडर्ड प्लूरल, तो हम इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब्स का यूज़ करते हैं. लाइक द कैटल वर टेकन टू द मिडोज, पीपल आर टॉकिंग टू द प्रोसेशन. ठीक है, तो पीपल ऑलवेज जो है वो प्लूरल फॉर्म में ही कंसीडर किया जाता है. व्हेन अ प्लूरल नंबर इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस, वेट एंड अमाउंट्स ऑफ मनी, दे टेक सिंगुलर फॉर्म. फॉर एग्जांपल, 3 years इज अ लॉन्ग टाइम, 5 years was a brief period. Like 10 kilometer is not a long distance. Understood? So whenever we use a pair of scissors, तो जब pair of का यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a pair of scissors is kept here. Now read the following sentences and fill in the blanks with appropriate form of verbs given in the brackets. For first example, the fragrance of these roses. So here fragrance is in singular form. We will use here is. The fragrance of these रोजेज इज, क्योंकि फ्रेग्रेंस एक तरह से काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन भी है, तो हम इसके लिए इज का यूज़ करेंगे. द लॉर्ड, अब लॉर्ड के हिसाब से यूज़ करेंगे तो अगेन इट विल बी इज. द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज इंटरेस्टिंग, सो इट्स आई गेस इट्स अ नेम ऑफ बुक्स. माई फादर एंड मदर, सो बोथ प्लूरल है तो यहाँ पे आर हो जाएगा. माई फादर एंड मदर आर वेरी इनकरेजिंग. अ लॉट ऑफ मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसके लिए इज यूज़ करेंगे. अ लॉट ऑफ मिल्क इज केप्ट इन द पैन. A lot of guest, so guest given in plural form, और वैसे भी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, तो we will put here are. A lot of guests are wishing my father on his 50th birthday. Understood? Next, a pair of scissors, तो pair के साथ आपको पता है सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे was हो जाएगा. A pair of scissor was bought, क्योंकि yesterday की बात हो रही है तो इसलिए हम is नहीं लगाएंगे. The cleanliness in charge is. Understood? The musical troupe was performing at the concert. yesterday लग रहा है तो यहाँ पे हम was कर देंगे. ठीक है, the musical troupe was performing at the concert yesterday. My friends, अब यहाँ पे plural form है तो यहाँ पे are हो जाएगा. My friends are going out for dinner. Mathematics appears, क्योंकि mathematics singular है, it's an subject. ठीक है, mathematics appears. These books, अब books है तो plural form में है तो belong ही यूज़ करेंगे, उसमें s और es का यूज़ नहीं होगा. A list of groceries
ग्रोसरी आइटम्स इज रेडी, क्योंकि ग्रोसरी लिस्ट की बात हो रही है तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब वन के हिसाब से लगेगा तो इज हो जाएगा, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज ऑन लीव टुडे, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज a singular verb is used when any of the following is the subject of a sentence. For example, anyone, any other, anybody, each, either, everybody, everything, neither, nobody, none. तो इनके साथ में हम singular verb का ही use करते हैं. They do not take are. Understood? Same goes with either or, neither, nor. इनके साथ भी हम singular का ही use करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल व्हेन नीदर नॉर ईदर आर, ये प्लूरल के साथ जब पेयर किए जाते हैं तो ये प्लूरल वर्ब भी लेता है, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच वी आर यूजिंग. Now read the following sentences and fill in the blanks with appropriate form of verbs given in the brackets. Next, neither Sonal nor Mahi. तो अब यहाँ पे ये singular है, so we will use here is. Neither Sonal nor Mahi is bringing a bouquet of flowers. Either the boys or the girls are presenting a play. Neither my friend nor my neighbor is arriving early. Then neither the flowers nor the palm leaves are fresh. Next, either the pen or the pencil is lost. The news is, न्यूज़ जो है however it looks like ये प्लूरल है, बट अगर आप ऐसा हटा दोगे तो ये न्यू हो जाएगा, तो न्यू जो है वो एडजेक्टिव होता है, न्यूज़ जो होता है वो नाउन होता है, सो वी विल पुट हियर इज. न्यूज़ इज फ्लैशिंग अक्रॉस द टेलीविजन स्क्रीन. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका is finalizing the nuclear deal with India. A pair of sparrows, तो पेयर के हिसाब से is हो जाएगा. A pair of sparrows is sitting on the fence. Everyone is expecting a good monsoon this year. Nobody is scared of darkness in my family. When as well as with or along with or used to join two nouns in a sentence, the verb agrees with the noun mentioned first. The above teachers along with the principal. So here teachers के according हम subject का use करेंगे, जो पहले use हो रहा है उसके हिसाब से. My sister with all the cousins, तो यहाँ पे my sister के हिसाब से use करेंगे verb, ना कि cousins के हिसाब से. Understand? For example, my friends, अब as well as जो होते हैं उसमें जो पहला वाला subject होता है उसके हिसाब से use करते हैं, तो my friends are use होगा. Understand? Mrs. Gupta with her family, so Mrs. Gupta के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा, दैट इज. रीता एज वेल एज हिज ब्रदर्स, तो यहाँ पे रितेश एज वेल एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पे जो बाद वाला यहाँ पे जो एज वेल एज होते हैं उनके साथ में हम बाद वाले के हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेट हो गया, तो यहाँ पे जो नेबर है उसके लिए हमने आर लगा दिया. अब रितेश में यहाँ ब्रदर्स हैं तो यहाँ पे हम आर लगा देंगे, ब्रदर्स के साथ भी आर का यूज़ होगा. रिंकू अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज, तो यहाँ पे रिंकू के हिसाब से होगा, ना कि अलॉन्ग के, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप दिस विल हेल्प यू.